guys, assalamu alaikum. I hope you will be doing great. So in this video I'm going to explain you a little bit about sweep, how does that work, where we can use it, and what is the difference between sweep and extrude modifier in 3ds Max. So first of all I would like to explain where you can use it. For example, जितने भी हमारे पास doors हैं, like this kind of stuff inside doors, ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं, this is made with sweep. This guy here too, ये side जो है या ये जो अंदर वाले panels हैं, this is all made with sweep. These panels also made with sweep. These guys too. So this is heavily used after extrude. This is the most used modifier in 3ds Max. ये वाला part जो है, this guy here, ये सारे ब्लॉक्स जो हैं, वॉल पैनल्स जो हैं, मोल्डिंग्स हैं, वॉल स्कर्टिंग्स हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हम स्वीप से बना सकते हैं. एक्सट्रूड से भी बन सकती हैं, but not that detailed. It will take a lot of hours to make, but like with sweep it can do the hours job in minutes. So this door also is made with sweep. These guys here, ये जो sides पे आपको left and right में चीज़ें नज़र आ रही हैं, these are extrude, but inside this guy here, this is made with sweep. The top guy, this part is also made with sweep. So these panels, ये जो छोटे छोटे आपको blocks नज़र आ रहे हैं, ये जो detailing आपको नज़र आ रही है, this is all done with sweep. So this is like perfect example of sweep. Sweep में क्या होता है? It's very similar to extrude, but extrude में क्या करते हैं? Extrude में it's like straight. It doesn't have any direction. ये जितनी हम उसको value देंगे, उतना वो उसको ये kind of dimension दे देगा 3D. तो sweep में क्या होता है? Sweep में you can see A and B. What is A? A is sweep profile. B is path. तो हम प्रोफाइल बनाते हैं और एक पैथ देते हैं उसको कि आपने इस पैथ को फॉलो करना है, and this is the result we got. So I will just demonstrate you a couple of things to make you understand what actually sweep is, what is extrude. I hope you know extrude. I just made a quick sketch over here. We'll go through it and we'll make it again, but इस sketch के ऊपर मैं लगा रहा हूँ extrude modifier. So I have all the modifiers here which I use most frequently, but you can find it over here in this list, extrude modifier. So extrude में हमने ये amount देते हैं, तो ये सीधा जितनी amount देते जाएंगे it will follow the amount and it will be extruded. So this is extrude. Now let me show you what sweep is. For example, ये एक curve है, path है, और ये हमारी sweep profile है. इस path को हम select करेंगे. ये जो path है इसके ऊपर हमने sweep modifier लगाना है. Again I have all the modifiers here. I have shortlisted them. You will have to find it in the list if you don't see something here. तो यहाँ पे sweep modifier ये रहा. इस line के ऊपर हमने sweep modifier लगाया है, and it is like it has some custom profiles. जिस तरह मैंने बताया कि this guy is sweep profile. So कुछ बनी बनाई profile 3ds Max में पड़ी हुई हैं. If you want to utilize them you can, but if you want to like make your own, that's like standard practice and a lot of people do that. So I'm gonna select here, these are the pre-made things here: tube, egg, ellipse, pipe. There are a lot of stuff. As you change the profile you will see the immediate change in this guy here. So let me show you the shaded view. Perfect. So ये एक बार है, यहाँ पे you will see channel. बाज़ दफ़ा मतलब roof या में या structure में ये चीज़ यूज़ होती है, but we're not gonna use these guys. We are going to use our own. So I would like to select this guy here, use custom section. So now it's asking, okay, you want to go with custom guy. So click on the pick. हमने pick करना है and click over here on this guy. हमने इसको select किया था और ये path दिया और ये sweep profile दी, तो we got this kind of shape. So you can see it's very cool. अच्छा, जब you get the shape, there are further a few controls if you want to mirror the direction. So for example, if I mirror XY, so you can see it's flipping the direction. Similarly XY plane, ये मतलब
जो XY प्लेन के ऊपर उसको मिरर कर देगा, एंड दिस इज YZ प्लेन. सो इन whichever direction you want. जब हम रूम बना रहे होते हैं तो रूम के अंदर इसको लगाना होता है, तो you can adjust accordingly. Like sometimes you have to mirror both ways, sometimes you don't have to mirror. It's totally fine. These guys here, this is like the ये वो आपको दिखाता है कि जो आपकी स्वीप की लाइन थी या जो डायरेक्शन थी उसके अगेंस्ट ये कहाँ पे स्टैंड करेगा. इफ़ यू क्लिक हेयर, ये थोड़ा सा उस लाइन के जो हमने लाइन लगाई हुई थी, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर ये जो स्केच ये हमने स्वीप किया है, ये उस लाइन के कहाँ पे आएगा. सो फॉर एग्जांपल स्केच इज़ राइट हेयर, एंड इफ़ यू चेंज द पोजीशन ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ये मिडल में रहेगा. सो दीज आर जस्ट कंट्रोल, यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. अभी हम थोड़ी देर में इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल हैव एन आइडिया. सो लेट्स हाइड दिस एंड अनहाइड दिस रेक्टेंगल गाय हियर. अगेन आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल अप्लाई स्वीप मॉडिफायर. ऑलराइट, स्वीप मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो डिफ़ॉल्ट चीज़ लग जाएगी जो इसके अंदर हमने पिछली दफ़ा सेलेक्ट की थी. लेट्स skip this guy, use this button over here, and I would like to pick, and I will click over that guy. Perfect, that was smooth. So अच्छा, for example it was like a kind of inside room, roof की थी, तो roof में तो ऐसे नहीं लगती, roof में तो अंदर की तरफ लगती है. So we'll come to the sweep parameters and we will mirror, and yes, this is what we wanted actually, कि ये हमें roof में अंदर से ऐसे नज़र आए कुछ. alright, so this is cool. हमने मिरर किया. अच्छा, फिर हमने जो हमारे रेक्टेंगल था उसकी हमने अगर चेंज करनी है, उसके मिडल में, इनसाइड, टॉप, लेफ्ट, ये जहाँ पे भी हमने करनी है, दिस इज you can adjust. When it will be inside the room it will be more clear to you guys. So this was a little bit introduction and the difference between sweep modifier and extrude modifier. Meanwhile अभी हम इसको practice करेंगे how to sketch this guy here, how to get the sweep profiles, and how we can actually draw the sketch. But before going to sketching I would like to give you a little bit introduction about the sketching के अंदर how does this work and how is actually like sketch के अंदर main points कौन से होते हैं जिनको हमने deal करना होता है. So I'm deleting everything over here and let's get to the Photoshop. To explain you don't need to have the Photoshop, or you don't have to open the Photoshop. I just open it because it's I feel comfortable while drawing or sketching. So किसी भी कोई भी स्केचिंग सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल 3ds Max में भी हम स्केचिंग करते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं. इफ़ यू डू स्केचिंग, सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट इन द स्केचिंग इज़ के स्केचिंग के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको ये जो हमारे वर्टिसेस होते हैं, हर जो भी सॉफ्टवेयर होता है, whatever you work with, there are उसमें वर्टिसेस होते हैं, तो there are different ways to control the vertices. So उसमें एक है corner, that's weird. Alright, got it. Pardon me for a second, I just need to adjust the resolution, so you just don't need to worry about this. This is just routine stuff. Alright, तो जो sketching होती है, जो lines होती हैं जो हम 3ds Max में लगाते हैं, there are multiple types of the corner adjustment. जो उनके corners होते हैं, जो vertices होते हैं, उनको for example हमने जो वहाँ पे rectangle लगाया था, for example this guy here, ये जो आपको 4 corner नज़र आ रहे हैं इसके, if I convert to editable spline, यहाँ पे ये जो आपको 4 corner नज़र आ रहे हैं, I selected vertices from here. So there are different ways to control these vertices. Whenever I select, you see I see green dots over here.
green dots over here. So there are different ways you can control. You can control their smoothness, their roundness, and everything. So there are multiple ways. So these are the different ways: corner, Bezier corner, smooth, corner, smooth, and there will be one. ये कैसे appear होती है? When you right click on them, कोई भी word select करें, उसके ऊपर right click करें, you will see Bezier, corner, smooth, and yeah, Bezier one is Bezier. So these are like 4 type of adjustments or controls जिनके ज़रिए से you can adjust these guys over here. सबसे पहले जो है corner में क्या है? This is like corner आपके सामने है, like this one. This is not smooth. If you move it from here, you can only like move. तो ये corner है, बिल्कुल corner, like from it's very like self-explanatory. So meanwhile, let me show you how it works. Okay जी, तो ये है हमारे पास corner. Alright, and then we have Bezier corner. Bezier corner क्या करता है? ये आपको Bezier actually है क्या? Bezier is like smoothness. If we talk about like in shortcut, तो Bezier is this thing, smoothness, like roundness. This is Bezier. Mostly it's called, if you like type Bezier on Google, you will find this kind of sketch. So Bezier is like kind of smoothness sketch, not corner stuff, but इसमें हमारे पास ऑप्शन आती है Bezier corner की. What is Bezier corner? It means it will remain corner as well, but you will get the Bezier controls as well. Bezier controls क्या है? Beziers are actually like the guide curves which allows you to smooth this guy here. ये जो yellow वाली है ये Bezier corners है for example. ठीक है, अब इसकी मैं आपको practical example आपको दिखाता हूँ. तो for example ये अगर इस सब को हम select करें और default में हम रखते हैं corner, तो ये भी corner है, ये भी corner है, ये भी corner है, ये भी corner है. Now this guy I make it Bezier corner. Apparently it's corner, but it gave us the 2 additional lines. ये जो आपको green dots नजर आ रहे हैं, these are actually lines. ये देखें, ये जो yellow सी line आपको पेयर हुई है मिली है, this is like line. You can adjust the smoothness, the roundness. अब देखें Bezier corner में क्या हो रहा है? This guy is still here, this is fixed. ये वाला corner disturb नहीं हो रहा, but whenever I like try to adjust, this is like this part is getting smooth. Similarly जब मैं इसको adjust करने की कोशिश करता हूँ तो other guy is fixed, nothing being happen to that guy. So this is very flexible. This is most used part in the 3ds Max, the Bezier corner. I hope you understand. Then smooth. So smooth क्या है? For example, if पहले ये चीज़ थी, तो then जब हम इसको इस corner को, ये जो corner है हमारा, इसको smooth करेंगे तो you will get this kind of result. So it will not ask you how much, but it will make it smooth. ऐसे कर देगा इस चीज़ को. So I'll show you practical example. So for example ये वाला पहले corner था, अभी इस पर राइट क्लिक किया and make it smooth, तो ये बगैर पूछे बताया आपके, इसने अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर दिया. बट Bezier corner में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम इस लाइन को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, इस वाली को, and this the vertical line is not getting disturbed. So this was like kind of very flexible Bezier corner. But the smooth guy, without asking you, it's kind of mess. I don't like that. So this was smooth, and next we have Bezier. Sorry, I should follow this guy, but this last one is Bezier. So right click and then we have Bezier. Okay, Bezier में it gives you the curve, but that curve is like not independent. So पूरी की पूरी line को इसने smooth भी किया, but it gives you the options too. So whenever we adjust these guys, you can see we have 2 points. This guy is on separate part, this guy on separate part, but it is like allowing us to do a little bit of adjustment. On some places we are gonna use it, but like you can say it's gonna be used like kind of 1%. So
ऑल गुड, कंट्रोल Z प्रेस किया, सबको अनडू किया. आई होप यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट बेजियर corner is. We are going to use most of the time Bezier corner and for making the sweep profiles and everything. So let's get into making some sweep profiles. I hope you understood the Bezier corner stuff and the other stuff. So initially, just for the practicing, there are a couple of things I have saved. So maybe we can start with this simple guy here, or maybe let's go with this guy. Alright, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? We have to save image as so I just saved the image, it's over here, and we'll save another one. Let me find out which one is good. Maybe we'll make 2 sketches so you better understand what actually the concept is behind this. Alright, we can try this one here too. Alright, cool. So we just save this guy over here. सबसे पहला काम आपने क्या करना है? If you don't know Photoshop and if you don't want to use that, just right click over there and file information. You will see the dimensions over here. It means कि इसकी जो width है इस image की वो 500 है, ये जो चौड़ाई वाला part है, and height is 713. This is pixels, this is not inches, this is not centimeter, this is not feet. Pixel is the different stuff. Pixel is like small tiny dots जिससे मिलके एक image बना होता है, but that centimeters, meters, millimeters and feet, those are the different guys, वो measurement units होते हैं. तो ये क्या है? dimension 500 by 713 है. वैसे इसकी डायमेंशन भी यहाँ पे मेंशन है. इफ़ यू वांट टू बी एक्यूरेट, आई वुड रिकमेंड, वो भी मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन बी मोर एक्यूरेट. सो बट राइट नाउ आवर प्रायोरिटी इज़ टू गेट दिस गाय इनसाइड 3ds Max. इसको लेके जाने के लिए हमने ये डायमेंशन, इस डायमेंशन का एक प्लेन लगाना है जिसकी चौड़ाई 50 होगी और हाइट 71 होगी. जस्ट इग्नोर दिस गाइज एयर, बिकॉज अगर हम ये 500 बाय 713 का लगाएंगे तो वो 15 फीट बाय 15 फीट का बनता है. तो हम बस छोटा सा 50 सेंटीमीटर बाय 71 सेंटीमीटर इतने का लगाएंगे. तो विल कम टू द, मेक श्योर यू आर इन द फ्रंट प्लेन. I selected the plane from here. Alright, एक सेगमेंट का लगाना है, so I'll ignore that. So इसकी जो हाइट वाला है, you remember this guy is here for the height, so हमने हाइट 71 रखनी है and the width is like kind of 50. Okay, cool. अब ये हमने इसकी एक्यूरेट डायमेंशन क्यों ली? ताकि जब अगर इसको हम नहीं लेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम 50 बाय 50 का लेते हैं, तो जो हमारा इमेज आएगा वो पिच का हुआ आएगा. लेट मी शो यू. सो हमारा इमेज कहाँ गया? ये रहा इमेज. तो इसको मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यू कैन सी कि हमारा इमेज एक्चुअली में देखें ये लंबा है, बट यहाँ पे ये पिक्चर हुआ, पिच का हुआ है. ये देखें टेक्स्ट भी सही नहीं आ रहा, अनशेप भी डिस्टर्ब है. सिमिलरली इफ यू ट्राई दिस गाय हियर, तो ये देखें ये कितना पिच का हुआ है. तो दिस विल कॉज यू इनएक्यूरेसी. तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमने यू हैव टू मेक इट 71. तो अब ये ठीक है, अब ये एक्चुअल साइज में है जिस साइज में हमारे पास तो पिक्चर में था. ऑलराइट, कूल. सो हमने क्या करना है? हमने स्केच ट्रेसिंग करनी है. सो अच्छा, ये अब हमारे पास
40 millimeter है, which means it would be 4 mm, but right now for practicing you can follow as it is. So हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन था हमारा, इसी के ऊपर we will like to create a line. ठीक है, अभी ये लाइन लगाएंगे. So पहली लाइन let's start from here or here wherever you are comfortable with. यहाँ से start की, यहाँ पे लगाई, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे. अब मैं ये बिल्कुल शिफ्ट प्रेस किया है मैंने, तो ये लाइन सीधी लग रही थी. अभी ये थोड़ी सी कर्व है तो मैं शिफ्ट छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, ये लाइन सीधी लग गई. यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, एंड यहाँ पे फिर से क्लिक किया, एक फिर एक क्लिक यहाँ पे किया. अब ये हमें सीधी लाइन चाहिए, शिफ्ट प्रेस कर दिया, click here, and then we'll click again over that yellow guy here, and it will ask if you want to close the subline. Click yes, I want to close the subline. Okay, perfect. तो ये हमारे पास आ गई जी. अब हमने क्या करना है, हमने ये जो कॉर्नर्स, ये जो स्मूथनेस है ये देनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. वो माशाल्लाह आपको पहले मैंने बता दी है कि you can do it with the bezier corner. So हम क्या करेंगे, इस पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे and we'll select it bezier corner. Perfect. ये हमारे पास यहाँ पे लाइन आ गई, इस पे भी राइट क्लिक करेंगे, बेजियर कॉर्नर. हमारे पास कंट्रोल्स आ गए, तो हमने क्या करना है, कंट्रोल पे क्लिक किया एंड यहाँ से इसको एडजस्ट किया. अब नाउ देयर इज लॉट ऑफ टाइम हैपेंस, स्टूडेंट्स कम एंड दे से ओके आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट बट द ग्रीन गाय इज नॉट गेटिंग एडजस्टेड. उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका कोई एक एक्सिस सेलेक्टेड होता है. फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस सेलेक्टेड है, तो आई कैन मूव दिस ग्रीन डॉट ओनली ऑन एक्स एक्सिस, आई कैन नॉट ब्रिंग इट अपवर्ड. So what you have to do is just click this guy here. ये जो बीच वाला छोटा सा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, what does that do? ये आपको ग्रीन बॉक्स, ये जो ग्रीन बटन है, इसको आपको एक्स वाई दोनों पे मूव करने देगा. So you will get a little bit of flexibility. So I would click on this guy and I will make a little adjustment over here. Similarly I will do from this point here also and make the little adjustment. So you can see हमारी ये वाली जो लाइन है ये काफ़ी स्मूथ हो गई है. सो इसका भी हम करते हैं, ये थोड़ा सा स्मूथ है, तो राइट क्लिक करें, इसके ऊपर बेजियर कॉर्नर एंड जस्ट एडजस्ट अ लिटिल बिट. अच्छा, हमें इसमें नीचे वाले को करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन, बट एनी हाउ लेट्स मेक दिस गाय हेयर बेजियर कॉर्नर एंड दिस गाय टू बेजियर कॉर्नर. एंड नाउ वी विल एडजस्ट अ लिटिल बिट, इसको भी एंड इसको भी. Alright, make sure your circle is pretty smooth, you don't feel any kind of glitches in it, so looks cool. Alright, so इसको मैं साइड पे मूव कर रहा हूँ, तो you can see we got a pretty much good shape. बस एक मसला ये आ रहा है कि ये लाइन थोड़ी सी वर्टिकल नहीं है, ये इस लाइन में थोड़ा सा एरर है. so what we will do, हम इससे वर्टिसेस में आएंगे, ऊपर वाले वर्टिस को सेलेक्ट करेंगे और एस प्रेस करके हम इसको अलाइन कर देंगे इसके साथ. अब ये देखिए इसके साथ. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्नैपिंग टूल, जस्ट इग्नोर, यू डोंट हैव टू, जस्ट इग्नोर. अगर छोटी मोटी टेढ़ी है तो वी कैन फिक्स इट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम. सो आई कैन हाइड दैट गाय हेयर. तो हमारे पास ये प्रोफाइल आ गई है, वी कैन यूटिलाइज दिस प्रोफाइल लाइक एनीवेयर. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ रूम ऑफ let's say we have a rectangle, the top view, we have a rectangle here. Alright, and अब हमें इस rectangle को as a skirting use करना है. Let's make it like it was of 20 feet by 20 feet, 600 by 600 centimeter, and now we apply the sweep modifier over there. And यहाँ से आपको याद है कस्टम पिक करना है, pick this guy and boom, you will see आपकी जो प्रोफाइल थी is done over here. So you can mirror it, you can utilize it as you want, but that's like the main concept. You get this kind of stuff going on here. Right, we'll use it in the inside rooms, in the skirtings, and a lot of exterior as well. So yeah, so but yeah, this is the like the profile. You can make these guys here, but make sure अभी मैंने क्या किया था, अभी
मैंने रैंडम डायमेंशन के साथ लगाया था, बस इस प्लेन के ऊपर मैंने इसको ट्रेस किया था. बट इफ़ यू आर मेकिंग इट for the walls, for practices, this much is good, the one which we did. But if you are going to use it in the project which is actually scalable, like अगर आपने सच्ची के रूम में लगानी है प्रैक्टिस के लिए, you can draw any sketch. There is no hard and fast rule. But if you want to use it, for example, for making door, or for example you're making it on inside your house. So let me search something really quick for you so you can have a better idea. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको प्रॉपरली स्केल करना पड़ेगा. उसका स्केल करने का तरीका ये होता है कि यू गो टू द इमेज, सॉरी, यू सिलेक्ट कोई भी आप एक डायमेंशन ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ 139, दिस का है 139, दिस इज़ 40. तो मैं 40 को सिलेक्ट कर रहा हूँ. मैं एक किस्म का बॉक्स लगा रहा हूँ. लेट्स से बॉक्स हम लगाते हैं जी, ये लें जी, ये गुड. ये बॉक्स लगाया है. ये बॉक्स अब कितने का होना चाहिए, ये 40 mm है, तो ये 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी कितने का है, 13 का है. ये देखें, इसको मेक इट 4. अच्छा, तो ये वाली जो लाइन है ये वाली इस बॉक्स के ऊपर आनी चाहिए, विच मीन तब हमारा जो स्केल है वो पूरा होगा. तो इसको थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूँ ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो. इसको मैंने सेलेक्ट किया. अब मैं स्केल करूँगा इसको. You can make it in AutoCAD as well, but this is like the most frequently used. थोड़ा सा छोटा हो गया. अब थोड़ा सा इसको स्केल अप करेंगे. तो इस तरह से हम ये लेंगे परफेक्ट. ये भी 40 है. ये बॉक्स हमने जस्ट एज अ स्केल लगाया था, तो वी कैन डिलीट दैट. तो अब इसको हम चेक करने के लिए लेट्स सी, ये वाली 40 है, इसका मतलब इमेज प्रॉपरली स्केल है, तो ये भी 139 होनी चाहिए. लेट्स ट्राई. बॉक्स लेते हैं हम यहाँ से. दिस बॉक्स इज जस्ट फॉर द डायमेंशन, दिस वी आर नॉट गोइंग टू कीप इट. तो यहाँ पे है, तो इट्स 139, तो ये 13 होनी चाहिए तकरीबन. तो ये देखें 139 ऊपर यू कैन सी ऑन द लेंथ. दिस गाय इट्स 13.9 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 139 mm. सो आई होप दैट्स एक्सप्लेनेटरी. अब जब इसके ऊपर आप स्केचिंग करेंगे, अब हमारा एक्चुअल स्केच देखें और जो हमने लगाया था और एक्चुअल जितना होना चाहिए वो देखें. तो आपको जब आप एक प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो यू फॉर प्रैक्टिसेस दिस गाय इज़ गुड. जस्ट हमने रैंडमली लगाया, बट फॉर प्लेसिंग इट इनसाइड द रूम, जब हम बना रहे होंगे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, देन ट्राई टू स्केल इट डाउन टू द रियल डायमेंशंस. एवरीथिंग जो भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको डायमेंशन मिलेगी. एंड दिस इज़ लाइक रियली डूएबल स्टफ. दिस इज़ नॉट वेरी इम्पॉसिबल स्टफ और नॉट डूएबल, बट दिस इज़ लाइक हाउ इट विल अपीयर. तो उसको प्रॉपर स्केल करें. स्केल के बाद आप वहाँ पे लाइन लगाएं एंड देन यू ट्रेस. और जब आप इसको फिर आप इसको एक्सट्रूड करेंगे या स्वीप करेंगे, यू विल सी अ रियल टाइम रिजल्ट्स. दैट वाज ऑल. आई होप दैट वाज स्पीडी, बट या कीप in touch, and if you feel any difficulty just drop me a message. Hope to see you again. Bye.